Welcome to ConceptHub. Today we're starting an exciting journey into the world of ICT Fundamentals for Class 8. In this lecture, we'll explore emerging technologies, the innovations that are shaping our digital world. So stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe to ConceptHub. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आईसीटी का पहला टॉपिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये वो नए इन्वेंशंस हैं जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बन रही हैं। Overview. Emerging technologies. Internet of Things, IoT. Embedded systems, our services. Edge computing strategy, data analysis. 3D and holographic imaging. Artificial intelligence, AI. Computer-assisted translation, CAT. Virtual reality, VR. Distributed applications. Machine learning, blockchain technology. Robotics. 5G technology. What are emerging technologies? Emerging technologies are the new and advanced innovations in the field of information and communication technology, ICT. These are not yet fully developed, but have the potential to change how we live, work, learn, and communicate. ये टेक्नोलॉजीज नए आइडियाज़ और इन्वेंशंस होती हैं जो अभी टेस्ट या डेवलपमेंट फेज में होती हैं लेकिन फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। Examples: Internet of Things, IoT. Embedded systems are services, edge computing strategy, data analysis, 3D and holographic imaging, artificial intelligence, AI, computer-assisted translation, CAT, virtual reality, VR, distributed applications, machine learning, blockchain technology, robotics, 5G technology. 1. Internet of Things, IoT. IoT means connecting everyday devices like bulbs, fridges, watches, and fans to the internet, so they can collect and share data. For example, a smart AC turns on automatically based on temperature. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है रोजमर्रा की चीज़ों का इंटरनेट से कनेक्ट होना, जैसे स्मार्ट घड़ी या स्मार्ट बल्ब। Embedded systems. An embedded system is a small computer inside another device. It performs a fixed job, like controlling a microwave or making ATM transactions. एम्बेडेड सिस्टम वो छोटा कंप्यूटर होता है जो किसी डिवाइस के अंदर लगा होता है और उसे स्मार्ट बनाता है। 3. Edge computing. Edge computing means processing data where it is created, instead of sending it far away to the cloud. Like a self-driving car instantly making decisions. एज कंप्यूटिंग में डेटा को उसी जगह प्रोसेस किया जाता है जहां वो बनता है, जैसे स्मार्ट कैमरा में। 4. Data analysis. Data analysis means collecting and studying data to make better decisions. Like a company checking sales to see what product is most popular. डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को समझना, पैटर्न्स निकालना और बेहतर फैसले लेना। 5. 3D and holographic imaging. 3D imaging shows things with length, width, and depth. Holograms are floating images in air without screens. दस for holograms चीज़ों को 3 dimensions में देखते हैं और कभी-कभी बिना किसी स्क्रीन के। 6. Artificial intelligence, AI. AI lets computers think and make decisions like humans, like your mobile face unlock or Google Assistant. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और काम करने के काबिल बनाती है। Computer-assisted translation, CAT. CAT tools help translate languages using software, like English to Urdu using Google Translate. कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन में सॉफ्टवेयर आपकी मदद करता है एक ज़बान से दूसरी में तर्जुमा करने में। Virtual reality, VR. VR creates a full digital world that you can explore with a headset, like being inside a game or a virtual museum. वर्चुअल रियलिटी आपको एक नई डिजिटल दुनिया में ले जाता है, जैसे हेडसेट पहनते ही आप गेम के अंदर होते हैं। 9. Distributed applications, DApps. DApps work not on one computer but many. Like Google Docs, where many people can edit together from different places.
DApps एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि बहुत से कंप्यूटर पर काम करते हैं। गूगल डॉक्स की तरह जहां बहुत से लोग मुख्तलिफ मकामात से एक साथ तरमीम कर सकते हैं। 10. Machine learning. Machine learning helps computers learn from data and improve automatically. Like YouTube showing you your favorite videos. मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने और खुद ब खुद बेहतर बनाने में मदद करती है, जैसे YouTube आपको अपनी पसंदीदा वीडियोस दिखा रहा है। 11. Blockchain. Blockchain is a secure digital record that can't be changed. It is used in cryptocurrencies and secure voting. ब्लॉकचेन एक डिजिटल दफ्तर है जिसमें डेटा ब्लॉक्स की सूरत में सेफ रहता है और बदला नहीं जा सकता। 12. Robotics. Robotics is the science of building robots, smart machines that can do tasks on their own. Like a robot arm assembling cars, or a vacuum cleaning the house. रोबोटिक्स में हम ऐसे रोबोट्स बनते हैं जो खुद से काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री रोबोट्स या होम क्लीनर्स। 13. 5G टेक्नोलॉजी. 5G is the next generation of internet, super fast and super smart. It powers smart cities, online games, and even remote surgeries. 5G एक नई वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को लाइटनिंग फास्ट बनाती है और ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। Recap. Let's recap the 13 emerging technologies we learned today. IoT, embedded systems, edge computing, data analysis, 3D imaging, AI, CAT, VR, DApps, machine learning, blockchain, robotics, and 5G. Quiz. Now it's quiz time. Test your knowledge with our Google Form quiz. Link is in the description below. Thank you. If you enjoyed the video, hit like and subscribe to ConceptHub. Stay tuned for the next lecture, Computer Networks. Till then, keep exploring, keep learning.